Welcome back to my viewers. Welcome to Mathematics by Romina. And today in this class, we're going to understand about the last part of your permutations and combinations. Yes, it is the last part. So congratulations a lot. ये मेरे पास बिल्कुल लास्ट पार्ट है बेटा. मैंने इससे पहले 1 to 6 की एक सीरीज बनाई है जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है. सो प्लीज़ डोंट वॉच दिस पार्ट डायरेक्टली. गो एंड वॉच ऑल दोज पार्ट ओवर देयर और फिर आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा. So it's a very humble request. Please go and watch it. It's for all of you. After viewing all the 7 parts, आपको PNC में कोई भी डाउट नहीं होगा. आप JEE मेंस के सारे क्वेश्चन कर पाओगे. JEE एडवांस के आप लोग कुछ क्वेश्चन कर पाओगे. बट फॉर JEE मेंस ये आपका कंप्लीट पैकेज है फॉर योर PNC. ओके, द चैप्टर इज कंप्लीटिंग ऑन टुडे. Let's understand about the first topic that we're going to take. Distribution of alike object. In the last class I have taken distribution of distinct object. This is alike objects. So now what all distributions we have? So first of all beta, let me just give you one example. If I say you that we have 5 coins, let's take we have 5 books, 5 identical books. 5 identical books. और मुझे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है between 3 persons. So P1, P2, P3. अब वहाँ पे हम क्या करते थे, दैट इज़ छोटा और बड़ा, दैट इज़ 3 की पावर 5. बट वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मेरे पास. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू यूज़ वन फॉर्मूला. दैट मीन्स इसकी एक ट्रिक होती है बेटा. जब आप पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो तो तब क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, दैट इज इक्वल्स टू 5. 3 पर्सन थे, 3 हो गए एक्स वाई जेड, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कितने थे, 5 थे, तो दैट इज इक्वल्स टू 5. वेयर x की कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होगी, y की भी कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होगी, और z की भी कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होगी. दिस इज द कंडीशन दैट आई कैन फॉर्म. और ये कंडीशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. सो देर इज अ थियरी फॉर दैट, दैट इज नंबर ऑफ वेज. आई होप ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ओके, हमेशा आप लोग ऐसे करना, आपका आंसर फॉर श्योर निकल के आएगा. एंड just try to form such kinds of equation and you will surely get the answer. Remember, it should be identical or alike objects. Number of ways of distributing n identical objects. N identical objects. Assuming we can just say assuming m persons, or assuming r persons, in which person may receive any number of objects. इसमें बेटा बेसिकली आप लोग बहुत सारे केसेस भी बना के कर सकते थे, बट इट्स गोइंग टू कॉम्प्लिकेट यू ओनली पीपल. सो दैट्स वाई मैंने इसकी ट्रिक आपको बता दी है. That is n plus r minus 1 c r minus 1. Sorry, n plus r minus 1 c r minus 1. This is a formula that you can easily use and obtain your answer. ठीक है ना, यहाँ से आप तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा. The simple answer for this would be your simply 5 plus 3 minus 1 c r कितना था 3 minus 1. And that is my answer for this 5 identical books and 3 persons. Clear? I hope it must be clear. ये easy सा concept है, कुछ भी बहुत ज़्यादा difficult नहीं है इसके अंदर. मैंने यहाँ पे 2 condition आपकी already ली है ताकि I can just show you that how the working has to be done further ahead. So find the number of integral solution of x plus y plus z is equals to 10 and x plus comma y comma z is written equals to 1. So that would be, यहाँ मैंने 3 parts लिए थे. I don't know how the parts are not visible. Let me just give you one more part because I will just do 2 parts and मैं आपको एक homework दे दूँगी. Okay, so that आपको concept भी clear हो जाए. So find the number of integral solution. बस formula क्या था बेटा, formula आपका यही है, n plus r minus 1 c r minus 1. Now you know n क्या है मेरे पास बेटा, n would be this 10 and r would be 3. यहाँ पे जो percent यहाँ पे दिख रहे हैं ना, this would be our r. Okay. So that would be a part. बहुत सिंपल है, कोई भी कंस्ट्रेंट सारे 0 है. So that would be simply your 10 plus 3 minus 1 CR 10 plus 3 minus 1 C3 minus 1.
Now the part B would be your homework. I am going to see in the chat box that what you are getting as the answer. C part is x plus y plus z is equal to 10 and x जो है that is greater than equals to 1. मतलब कि जो x है वो कह रहा है कि भैया मुझे तो बुक चाहिए ही चाहिए. I need at least one book. जब बेटा उसको आप एक बुक दोगे तो how many books are left over here? So here we are left with 9 books. और जब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 9 बुक्स है आई कैन से कि अब मैं क्या इन 9 बुक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ. हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो. सो नाउ योर कंस्ट्रेंट वुड बी दैट इज एक्स इज 0, y is also 0 and z is also 0. So I can simply say my answer would be 9 and r कितना अभी भी 3 ही है. So 9 plus 3 minus 1, C 3 minus 1. That was the answer for these two question. काफ़ी सिंपल है एंड दैट वॉज द लास्ट टॉपिक. बट आई हैव टेकन वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपका जेई एडवांस में आ चुका है. आई थिंक इन 2020 ये आपका आ चुका है और ये सब कुछ मैंने करवाया नहीं था. सो आई जस्ट कम टू नो अबाउट दिस क्वेश्चन. सो आई जस्ट टेकन इट रैंडमली. ओके. Find the number of triangles that can be formed joining mark points. There are some mark points and I just have to form the number of triangles. As you all know, for forming number of triangles, we need 3 points like this. So if I just say how many points are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points are there. So total outcome can be your 12C3. ये होंगे कि इतने आपके पास बन सकते हैं ट्रायंगल्स. बट बेटा जो यहाँ पे लाइन एक बनेगी उसमें तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा. सिंस नो ट्रायंगल वुड बी पॉसिबल सो दैट वुड बी योर सिंपली कितने पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 दैट इज 6C3. ओके ना माइनस कर दिए बिकॉज दैट ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दैट पॉइंट्स. यहाँ पे कितने पॉइंट्स है 1 2 3 4. सो -4C3 माइनस यहाँ पे कितने पॉइंट्स है बेटा दैट इज सिंपली योर सॉरी 1 2 3 4 5 बेटा 5 पॉइंट्स है. यहाँ पे हम 5 लेंगे. 1 2 3 4 यहाँ पे 4 पॉइंट्स है. ओके. So yes, this is going to be the answer for this question and that's all for today. I have just taken one last concept that was there to explain you people and one extra question. And now you can just send me your query on this Yahoo ID. Beta, I would say firstly comment me below and because soon I'm going to make a Telegram group ताकि मैं उसमें थोड़ा active रह सकूँ. I'm just going to work on that only today. So मैं बहुत जल्दी वो टेलीग्राम ग्रुप लेकर भी आ रही हूँ. टिल दैट जस्ट कमेंट मी बिलो. आई कैन जस्ट बी एक्टिव मोर ऑन कमेंट्स and I'm there with you. Don't get demotivated. I'm there with you. We are going to study together and rock the show. So thank you so much class. Just be ready for your April attempt. Okay, your April attempt just have 2 more months, so just be ready for that. Thank you so much. Bye bye. Take care.